स्टूडेंट्स हेलो लर्नर, आप लोगों का एग्ज़ाम है 27 को यूपी बोर्ड, देन आईसीएसई बोर्ड एंड ऑल्सो सीबीएसई बोर्ड। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट समरी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन इज ए नॉन मेटल, इट्स सिंबल इज सी। Carbon is a versatile element. The percentage of carbon present in the earth crust in form of mineral is 0.02% and in atmosphere in the form of CO2 is 0.03%. All living things, plants, animals are made up of carbon-based compounds. Carbon always forms covalent bonds. Its atomic number is 6 and its mass is 12. Its electronic configuration is 2 and 4. How carbon attain noble gas configuration? By taking 4 or losing 4 electrons. Carbon is tetravalent, it does not form ionic bonds by either losing 4 electrons or by gaining 4 electrons. It is difficult to hold 4 extra electron and would require large amount of energy to remove 4 electron. So carbon can form bond by sharing of its electrons with the electrons of other carbon atoms or with other elements and attains noble electronic configuration. यानी कि एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड्स, it only forming covalent bond by the sharing of its 4 electrons with other elements. Either it can form carbon-carbon bond also, it can form carbon-hydrogen bond, oxygen, nitrogen and all. Carbon can form different types of elements by covalent bonds. The atoms of either elements like hydrogen, oxygen and nitrogen, chlorine also form bonds by sharing of electrons. The bond formed by sharing of electron between same or different atoms is called covalent bond. Now here is H2H2 covalent bond, HH covalent bond where hydrogen form single bond, oxygen by sharing of 2 electrons form double bond, nitrogen by sharing of 3 electrons to attention the noble electronic configuration form triple bonds. Molecule of water has single covalent bonds between oxygen and hydrogen. 2 hydrogen form 2 covalent bonds with oxygen. These are Lewis electron dot structures. Basic physical properties of covalent bonds. Covalent bonds have low melting and boiling points as they have weak intramolecular forces. They are generally poor conductor of electricity as electrons are shared between atoms and no charged particles are formed. Why carbon shows versatile nature? This is very important question, most important question. The two characteristic carbon properties of carbon element which lead to the formation of large number of compounds. Number 1, catenation. This is very important. इसकी definition many times पूछी जाती है different examinations में. Catenation. Carbon can link with carbon atoms by means of covalent bonds to form long chain, branch chains and closed rings. Compounds carbon atoms may be linked by single, double और triple bonds. तो यहाँ स्टूडेंट्स टू वर्ड्स में डेफिनेशन हम कह सकते हैं कार्बन की सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी. द सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन. इट कैन फॉर्म चेन कंपाउंड्स, it can form branch compound or it can form closed compounds, and it has tendency to form multiple bonds, carbon carbon single bonds in alkanes, double bonds in alkenes and triple bonds in alkynes. Tetravalency. Carbon has 4 valence electrons. Carbon can bond with 4 carbon atoms, monovalent atoms, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. सभी के साथ ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल एंड सल्फर के साथ डबल बॉन्ड. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. They are of two types, saturated hydrocarbons and unsaturated. Single bonded carbon compounds are called saturated like alkanes, and double or triple bonded carbon compounds are called alkenes and alkynes, unsaturated hydrocarbon. The general electronic configuration पूछा जाता है MCQ टाइप क्वेश्चन में. CnH2n+2 for alkanes, CnH2n for alkenes and CnH2n-2 for alkynes. Here n is the number of carbons. Electron dot structure of saturated hydrocarbons we have already discussed. Here hydrocarbons के C2H6 का, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और 3 बॉन्ड्स बना रहा है ईच कार्बन विद हाइड्रोजन. द नेम्स मॉलिकुलर फार्मूला एंड सैचुरेटेड फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्किन हो गया. यहाँ पे मीथेन फार्मूला होता है मीथेन का CH4,
ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला ये होता है। इथेन, यहाँ पे ये टी है, C2H6 ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला। प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। यहाँ पे ये होमोलोगस हैं एल्किन्स के। पेंटेन C5H10 फार्मूले की हेल्प से आप आसानी से फॉर्म कर सकते हो। मैंने डिफरेंट वीडियो अपलोड कर रखी है कैसे हम फॉर्मूले बनाते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैं चैप्टर की कंप्लीट समरी दे रही हूँ विद इन 10 मिनट्स में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये एल्किन्स का, एल्काइन का, ये इनकी होमोलोगस है अगेन। दीज आर द होमोलोगस ऑफ एल्किन्स एंड एल्काइंस, आप देख सकते हैं और डेप्थ में जाके चैप्टर पे देख सकते हैं, चैनल पे देख सकते हैं। कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन यानी अनब्रांच्ड स्ट्रेट होते हैं C3H8 टाइप के कंपाउंड। ब्रांच्ड में साइड चेन आ जाती है, जैसे पैंटेन, नियोपैंटेन, आइसोपैंटेन। एंड साइक्लिक कंपाउंड्स लाइक साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन या बेंजीन वगैरह। फंक्शनल ग्रुप्स इन हाइड्रोकार्बन chain, one or more hydrogen atom is replaced by other atoms in accordance with their valencies. There are heteroatoms. These heteroatoms or groups of atoms which make carbon compounds reactive and besides its properties are called functional group. Like Cl, BrO, हेलो क्लोरोब्रोमो कहते हैं BrCl को, आई को आयोडो, OH है तो अल्कोहल, CHO है तो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH एल्किन्स के लिए डबल बॉन्ड, एल्काइंस के लिए ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। होमोलोगस सीरीज, इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप substitutes for the hydrogen in carbon chain। CH2 ग्रुप होता है बेसिकली। Alcohols like methanol, ethanol, propanol, butanol have same general formula. Any two homologous differ by CH2 group and difference in molecular mass by 14 because 12 plus 2 have same chemical properties but show gradual changes in physical properties, क्योंकि molecular mass बढ़ने से melting point, boiling point, solubility और density में difference आता है। Nomenclature of carbon compounds identify the number of carbon atoms in compounds. Functional group is indicated by suffix और prefix। यहाँ आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप हेलोजन, ये प्रेफिक्स में क्लोरोब्रोमो आयोडो के फॉर्म में होता है, जैसे क्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन की चेन क्लोरोप्रोपेन। अल्कोहल में सफिक्स ऑल होता है, प्रोपेनॉल 3 कार्बन की चेन। एल्डिहाइड का अल होता है तो प्रोपेनल, कीटोन का 1 होता है तो प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड होता है तो प्रोपेनोइक एसिड। हमने यहाँ 3 कार्बन की चेन के एग्जाम्पल लिए हुए हैं सभी। एल्किन्स के लिए प्रोपेन, एल्काइंस के लिए प्रोपाइन। Chemical properties of carbon compounds combustion. All the hydrocarbon on combustion with oxygen they give carbon dioxide, water, heat and light. Carbon and its compound are used as a fuel because they burn in air releasing lots of amount of energy. Saturated hydrocarbon generally burn in air with blue and non-shooty flame. Unsaturated hydrocarbon burn in air with yellow shooty flame because percentage of carbon is higher than saturated hydrocarbon which does not get completely oxidized. Oxidation, on oxidizing in the presence of oxidizing agent which is a strong oxidizing agent, potassium permanganate, either alkaline or acidic potassium dichromate, it gives acid because ethanol is oxidized into ethanoic acid. Addition reaction in the presence of nickel palladium catalyst, ऑन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन इट गिव्स एल्कीन्स। एल्कीन से हम एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं और ये मेथड यूज़ होता है वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए, जिसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन्स गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन व्हेन मीथेन treated in sunlight with chlorine it gives the chloromethane या मिथाइल क्लोराइड। Important carbon compounds ethanol and ethanoic acid. Physical properties of ethanol, कलरलेस, प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट होता है। सॉल्युबल इन वाटर, वॉलेटाइल लिक्विड है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सोडियम जैसे रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके एसिटेट देता है, सोडियम पेरोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। डिहाइड्रेशन करने पर ये एल्कीन देता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज़ होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड, कलरलेस लिक्विड हैविंग सोर टेस्ट एंड स्मेल ऑफ विनेगर। बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन यानी लो ही होता है। प्योर एसिटिक एसिड इज फ्रीज्ड, इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऑल्सो। एस्टरिफिकेशन, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में एस्टर्स देता है।
इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। स्वीट स्मेलिंग एस्टर इज फॉर्म्ड। जब एस्टर्स की रिएक्शन NaOH से करते हैं तो सोडियम एसीटेट प्लस एथेनॉल बनता है। इस प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। एंड सैपोनिफिकेशन एज ए सोप इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। रिएक्शन विद बेस, it gives sodium acetate plus water. Reaction with carbonates and hydrogen carbonates, it gives sodium acetate, water and carbon dioxide. Soap and detergents. Soap is a sodium or potassium salt of long chain carboxylic acids, C17H35COONA. Soap are effective only in soft water. Detergents are ammonium and sulfonate, salt of long chain of hydrocarboxylic acids. Detergents are effective in both hard and soft water. Soap molecule has ionic यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग. लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट. हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग पार्ट्स. Cleansing action of soap. Most dirt is oily in nature and hydrophobic and attached itself with dirt and ionic and is surrounded with molecule of water. This result in formation of a radial structure called micelle. Micelle या sometimes इसको micelles बोलते हैं. Soap micelles helps to dissolve dirt and grease in water and cloth gets clean. यहाँ oil droplet center में, यहाँ पे sodiums हैं. And magnesium and calcium salt present in hard water react with soap molecule to form insoluble product called scum. This scum creates difficulty in cleansing action. By use of detergent, insoluble scum is not formed with hard water and cloths get cleaned effectively. Thank you so for watching this. Dear student, you will get lots of questions from this small part. थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है. मैंने 10 मिनट्स की बनानी थी लेकिन ये 15 मिनट्स में के अराउंड पहुंच गई है. बट इसको लास्ट मोमेंट पे देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. गॉड ब्लेस यू. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम.